The Enemy Part 7. Then, quickly, with the cleanest and most precise of incisions, the bullet was out. Then, very quickly and very in a very clean manner and with most precise means exact cut he made. Incision means cut. He made a very exact. He was a wonderful surgeon, and the bullet was out. The man quivered. He quivered means he trembled, but he was still unconscious. Nevertheless, he muttered a few English words. And of course, in his unconsciousness, he uttered some words. Guts, he muttered, choking. They got my guts. Guts means it's a reaction actually, based on emotional response. जब आपको कुछ कोई करता है उसे सहता है तो guts. Sadao, Hannah cried sharply. Hush, Sadao said. The man sank again into silence so profound that Sadao took up his wrist. And at once the man, he sank into silence. He became so silent, so profound, so deep silent that Sadao was afraid that he has lost, he has gone, his pulse is gone. उसने उसकी wrist को check किया, hating the touch of it, though he did not like to touch him. Yes, there was still a pulse so faint, so feeble. Pulse थी बड़ी weak, very feeble, very weak. But enough if he wanted to the man to live to give hope. But he was enough pulse थी कि अगर वो चाहे कि ये आदमी जिंदा रहे. But certainly I do not want this man to live, he thought. उसने एकदम सोचा, but मैं तो नहीं चाहता कि ये आदमी जिंदा रहे. No more anesthetic, he told Anna. Hannah को कहा कि अब इसे और anesthetic मत दीजिए. He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicines he chose a small vial. Vial means a small bottle of medicine. अपनी medicine से एक bottle निकाली, and from it filled a hypodermic. Hypodermic is a syringe, एक syringe भरता है, and thrust it into the patient's left arm, and he injected it. Then putting down the needle, he took the man's wrist again. The pulse under his fingers fluttered once or twice and then grew stronger. और उसको इंजेक्शन देने के बाद he felt the pulse, he fluttered, थोड़ी सी वो शेक हुई इधर उधर once or twice, but then the pulse became strong. So this is how last of all Sadao saved him. This man will live in spite of all, he said to Hannah and sighed. और सडाउ ने कहा कि अब ये आदमी जिएगा. The young man woke so weak, his blue eyes so terrified. And that young man, he woke up, उसने अपनी आंखें खोली, he was so weak, his blue eyes were so terrified. Terrified means इतनी afraid थी, डरी हुई आंखें थी. When he perceived where he was, जब उसने perceived means when he saw where he was, जब उसने देखा कि मैं हूँ कहाँ पर, वो एकदम डर गया. That Hannah felt compelled to apologize, and at once Hannah was compelled, she was forced to apologize. उसने apologize किया उसको, उससे sorry feel किया कि where you are, don't worry. She herself served him, for none of the servants would enter the room, and she served him, and she gave him food and all because no other servant wanted to do it. When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. और जब वो सबसे पहले आई, she saw him summon means call his small strength. उसके अंदर जितनी भी हिम्मत थी वो उससे वो बैठता है और ऐसा डरा हुआ कि अब पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला है. Don't be afraid, she begged him softly. And then she begged him means she requested him, don't be afraid, you're not doing anything wrong. How come you speak English? He gasped. And at once that boy said, how are you speaking so good English? Gasp means caught breath with open mouth. एकदम उसने हैरानी से बोला. It means surprising way. I was a long time in America, she replied. She saw that he wanted to reply to that, but he could not. So she knelt and fed him gently from the porcelain spoon. और she saw that he wanted to say something, but she knelt, उसके बराबर में वो बैठ जाती है और फिर उसे खिलाने लगती है. And she told him not to talk. He ate unwillingly, but still he ate. उसने खाया, he did not want to eat, but he ate. Now you will soon be strong, she said, not liking him and yet moved to comfort him. Though she did not like him, वो अपना enemy तो है ही है ना. She said, now you will be strong. He did not answer. When Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up, his face bloodless with the effort. और third day जब Sadao came to observe the man, how he is feeling, he found the man was sitting up. And his face was bloodless. उसके face पे इतना pallor था, इतना पीलापन था कि there was no tinge of blood. Lie down, Sadao cried. Do you want to die? Sadao ने एकदम से कहा, लेटो. You want to die because you've got a fresh wound. He forced the man down gently and strongly and exactly and examined the wound. उसने उसको लिटाया और उसका wound को examine किया. You may kill yourself if you do this sort of thing, he scolded. और उसने उसे डांटते हुए कहा, तुम अपने आप को ऐसे मार दोगे. What are you going to do with me? The boy muttered. और एकदम से वो बॉय कहता है
कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू, अब मेरा आप करेंगे क्या. ही जस्ट लुक्ड बेयरली 17, और वो इस वक्त बिल्कुल 17 ईयर्स का लग रहा था. आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या तुम मुझे पुलिस में दोगे. फॉर अ मोमेंट सडाउ डिड नॉट आंसर. He finished his examination and then pulled the silk quilt over the man. He did not reply. I do not know myself what I shall do with you, he said. उसने कहा मुझे खुद नहीं पता what will I do. I ought of course to give you to the police. उसने कहा हाँ ये तो ज़रूर है कि मैं तुम्हें पुलिस में तो दूंगा. So he said, of course I ought of course मुझे देना चाहिए. Ought means मुझे moral duty है कि मैं तुम्हें पुलिस में दूँ. You are a prisoner of war. No, do not tell me anything. And then he told the boy, at once boy wanted to say something. तो उसने कहा नहीं तुम कुछ मत बोलो. He put up his hand as he saw the young man was about to speak. जैसे ही बोलने लगता है वो उसको चुप कर देता है. Do not even tell me your name unless I ask it. कहता है मुझे अपना नाम भी मत बताओ. They looked at each other for a moment and then the young man closed his eyes and turned his face to the wall. And उसके बाद the boy he turned his face. Okay, he whispered, his mouth a bitter line. और उसने कहा ओके. आउटसाइड द डोर हैना वॉज वेटिंग फॉर सडाओ. ही सॉ एट वंस दैट शी वॉज इन ट्रबल. उसे देखकर एकदम से सडाओ पहचान गया कि अभी कोई और प्रॉब्लम है. सडाओ, यूमी टेल्स मी द सर्वेंट्स फील दे कैनॉट स्टे इफ़ वी हाइड दिस मैन हेयर एनी मोर, शी सेड. और उसने कहा कि सडाओ नाउ सर्वेंट्स दे डू नॉट वॉन्ट टू वर्क विद अस बिकॉज दे आर सेइंग दैट वी हैव हिडन आर एनिमी. शी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग in America that we have forgotten to think of our own country first. And they think, उसने कहा, she said that they are thinking, the servants think that we have lived in America for so long that we have forgotten our own country, that we are no more patriotic. They think we like Americans. And she said that they mean servants think that we like Americans. It is not true, Sadao said harshly. Americans are our enemies. But I have been trained not to let a man die if I can help it. सडाव ने कहा कि नो इट्स नॉट राइट, अमेरिकन्स आर आर एनिमीज़, बट आई हैव बीन ट्रेंड, आई हैव अ गुड डॉक्टर एंड आई हैव बीन ट्रेंड कि मुझे मरता हुआ आदमी को ज़िंदा करना है. इट्स माई मॉरल ड्यूटी. द सर्वेंट्स के नॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सेड एंक्शसली. उसने कहा बट सर्वेंट्स ये नहीं समझ पा रहे हैं. नो, ही एग्रीड. नीदर सीम्ड एबल टू से मोर एंड समहाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन. एंड देन दे डिड नॉट से एनीथिंग, बट उन्होंने देखा कि जो हाउस होल्ड, जो घर का काम है वो ड्रैग्ड ऑन, इट वेंट ऑन, करते रहे वो लोग. द सर्वेंट्स ग्रीव मोर वॉचफुल एंड नाउ सर्वेंट्स दे बिकेम मोर वॉचफुल. वो ज़्यादा उनकी उस पर देखने लगे कि व्हाट दे आर डूइंग. दे कर्टसी मीन्स देयर पोलाइटनेस वॉज एज केयरफुल एज एवर, but their eyes were cold upon the pair to whom they were hired. Though they were very polite with them, they did not use any harsh language with Sadao and Hannah, but their eyes were very cold. उनकी आँखों से वो बता रहे थे कि they were not happy. It is clear what our master ought to do, the old gardener said one morning. और गार्डनर ने एक बार सुबह सुबह कहा कि इट इज़ क्लियर हमारे मास्टर जो करना चाह रहे हैं. ही हैड वर्कड विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मॉस. ये गार्डनर जो है उसने ज़िंदगी भर फ्लावर्स के साथ काम किया. फॉर सडाउस फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन्स इन जापान. एंड देन ही टॉक्ड अबाउट सडाउस फादर कि कैसे उन्होंने सबसे फाइनेस्ट मॉस गार्डन बनाया जापान में. Sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface. उन्होंने इतना ग्रीन कारपेट बनाया ग्रास का कि उसमें कोई भी पाइन नीडल नहीं थी, कोई भी लीफ नहीं था जो कि मार कर दे, जो कि स्पॉइल कर दे वेलवेट को. मतलब वो इतने अच्छे थे. डिप सिम्बॉलिकली इट मीन्स दैट ही वॉज सच अ ग्रेट पैट्रियट कि कुछ भी उनके ऊपर उंगली किसी ने नहीं उठाई. माई ओल्ड मास्टर सन्स नोज वेरी वेल वॉट ही ऑट टू डू. और मेरे मास्टर का जो बेटा है सडाओ, ही नोज कि उसे क्या करना चाहिए. ऑट मीन्स उसकी मॉरल ड्यूटी क्या है. ही नाउ सेड पिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम अ बुश एज ही स्पोक. एंड ही वॉज स्पीकिंग जब उन्होंने एक बर्ड को प्लक किया. व्हेन द मैन वॉज सो नियर डेथ व्हाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड. और उसकी समझ ये नहीं आ रहा कि जब ये आदमी मरने वाला था उसने उसको मरने क्यों नहीं दिया, उसका खून क्यों नहीं बहने दिया.